if you can read and you know what you like to read, and you have the resources to find those books, then it's a way to escape, it's a way to get a break from the trials of everyday life. So the Mehrauli Community Library is a free library for the residents of Mehrauli. The community library is largely volunteer-based. We have one staff, our librarian Mahima, and several other people involved as volunteers. हम जब स्कूल लाइब्रेरी में जाते थे तो वहाँ पे हमें गिनी चुनी ही बुक मिलती थी पढ़ने को, या फिर हम बुक भी इशू नहीं करवा पाते थे कई बार। बट उसके बाद मेरे एरिया में भी एक लाइब्रेरी खुली जो कम्युनिटी लाइब्रेरी थी, जहाँ पे मैं जाती थी। तो वहाँ पे मैंने जाना कि एक्चुअल में लाइब्रेरी क्या होती है। लाइब्रेरी का मतलब क्या है कि हम बुक को एक्सेस कर सकते हैं, सब लोग हर तरीके की बुक्स देख सकते हैं, जो हमें चाहिए हम वो बुक्स छू सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैंने सोचा कि काश आगे जाके मुझे भी ऐसी चीज़ें करने को मिले जिसमें मैं दूसरों को एक्सेस करा सकूं बुक्स। मैं किसी के सामने बोल नहीं पाती थी, पर मैं जब यहाँ आई तो मुझे उन्होंने बोला एक बार रीड अलाउड करने के लिए। फिर मैंने धीरे धीरे करा, तो मेरे पास कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। फिर धीरे धीरे करके मैं करती गई, तब मुझे आया। फिर मुझे बोलने की हिम्मत भी होने लगी थी सबके सामने। All of us, we work together to make this a place that the kids feel is their own and that they feel like they belong to and they have to take care of. So that it's not just directed by us that do this, do that, but then they say, I need to do this to take care of this space and to make this a better place for me to come in and then for me to develop myself further. This is really an effort to bring exposure to the kids and to give a taste of various activities where they may be able to discover their interest. लाइब्रेरी में आके यहाँ बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक अलग सा ही वो होता है, क्योंकि मैं पहले पढ़ाई में बहुत वो थी, पर जब से मैं लाइब्रेरी आना स्टार्ट किया मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ और मैं भी 3rd पोजीशन पे आई हूँ स्कूल में। चिक्कू को अपना पेंट ब्रश बहुत पसंद है। मैं अपने ब्रश से अपने लिए, जैसे कि मैम ने हमको एक बार बुक लेके पढ़ाया था और उसका मीनिंग भी समझाया, तो फिर मैं भी वैसे ही करने लग गया अपने घर में रीड अलाउड। तो फिर ऐसे रीड अलाउड करते करते मैं पूरा रीड अलाउड सीख गया। Quite early on, one of the kids said, "Good vibes," which I thought was really nice. So there's an emotional and psychological release in the process of reading on your own in a self-directed way. And so when you get the feeling that you actually might be helping kids to do it, that's very, very exciting.